अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ अब्दुल्ला शामीर विद यू विद अ न्यू सेशन। मुझे मालूम है रिजल्ट्स आ चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं इस दौरान, और बहुत सारे बच्चों को लगता है उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। बहुत सारे लोग बच्चे खुश हैं कि उन्होंने एग्ज़ाम भी नहीं दिया और उनका रिज़ल्ट बेहतरीन तरीके से आ गया है। और इसमें बहुत सारी पॉज़िटिव चीज़ें भी हैं, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे, ए लेवल्स के बाद हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो मैंने सोचा एक लाइव सेशन किया जाए और उस लाइव सेशन के अंदर हम आप लोगों की मुलाकात कराएँ। मैं अपनी एक सोर्स से आपको मुलाकात कराना चाह रहा हूँ कि मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, और एक्चुअली ही इज़ वन ऑफ माय मेंटर, जिन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ों के हवाले से ट्रेन किया, और मैंने सोचा कि मैं इनके साथ एक सेशन करूँ और आप लोगों के साथ भी मौजूद हैं। आज हम लाइव हैं अपने यूट्यूब चैनल के साथ-साथ साउथ शोर कॉलेज के पेज से भी, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं साउथ शोर कॉलेज के प्रिंसिपल सर राहील मसूद। हम एक सेकंड, हमने इनको बुला लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर राहील, कैसे हैं सर आप? Walaikum salam, Abdullah. Good to see you. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग हियर। और हम आपसे आज बहुत सारी बातें करने वाले हैं, हम आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछने वाले हैं, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम उनको भी लाइव लेने की कोशिश करेंगे। और इसमें आज जो हम बात करने जा रहे हैं, जैसे हम थोड़े से अपने व्यूअर्स को बताएँ कि हम आज बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो हम बात करेंगे ये ए लेवल रिज़ल्ट्स के हवाले से कि अभी ए लेवल रिज़ल्ट्स जो आए हैं वो क्या आए? अब इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? और जो अगर अपील करनी है तो अपील क्या इंडिविजुअल अपील कर सकता है? बहुत सारे सवालात सर मुझे भी मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मुझे मिले थे कि बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था कि भई ये अपील किस तरीके से होगी? हमें अपील करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले इसके बाद मैं आपसे बहुत सारी आज टाइम लूँगा आपका, और मैं आपसे ये भी जानने की कोशिश करूँगा कि ए लेवल्स के बाद हमें एडमिशन्स कैसे लेने चाहिए और व्हाट वी आर गोइंग टू फॉर द सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या होनी चाहिए? तो आज हमारी स्ट्रीम थोड़ी-सी आगे जाएगी, और सर सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आप जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम्स में रिज़ल्ट्स आए हैं बच्चों के, जो एविडेंस बेस्ड ग्रेडिंग, क्या आप उससे मुतमईन हैं? Abdullah, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, this is not an ideal situation for anybody, whether it is जी सर, कैन यू हियर students. मी? Can you जी hear सर, me? या आवाज आ आई रही है? कैन हियर यू। Okay. पर्फेक्टली फाइन। जी सर। So the point is that it's not an ideal situation for anybody. Obviously, the current situation in the world has prevented us from doing a lot of things that we consider are normal, and going to school or college is one of them. The O and A पर्फेक्ट, level results were a place where schools, colleges, teachers, administrators such as British Council and CAIE had to find a way for these young people to move forward. पर्फेक्ट, Things were very, very difficult for them. They couldn't hold the exams, yet they felt an obligation to give grades rather than just say, Asha, we're going to cancel the exams and not do anything. They said that we will come up with some sort of a solution. Now, when you're in that sort of a situation where, and the world is in a situation for many things, whether it's healthcare or transport, airlines were shut down, all kinds of things. So there's mayhem everywhere. So what British Council and CAIE got together, along with many people I know they took input from, and came up with some sort of a solution for young people that would give them some grades. And while it's not ideal, while it doesn't take into account their actual achievement, they came up with a process. And on August 11th, they provided grades to students. Now, as you said, many students are happy, many students are unhappy. And that's, if you think about it, every year that happens. I mean, it's not just unique to this year. Every year you've dealt with kids, I've been dealing with kids. So every year we see the same phenomenon. This year, obviously, लेकिन the सर passion. एक छोटी सी बात, आई एम सो सॉरी। बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल, तंग करता रहूंगा बीच में, जो आप बात मुझे लग रही होगी कि यार ये बात मेरे बच्चों के हवाले से है, तो मैं थोड़ा सा आपको तंग करूंगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस जरूर। सर। लेकिन मुझे एक बात बताइएगा कि मैं एग्जाम दूं, मुझे कोई फेल कर दे, मुझे समझ में आता है, सही है। लेकिन मैं जब एग्जाम ही नहीं दे रहा तो और मुझे कोई फेल कर दे, तो सर वो तो समझ में नहीं आता। आई एग्री विद यू। मसला ये है कि ऑल्टरनेटिव क्या था? ऑल्टरनेटिव था कि वो कहते हैं कि सारे एग्जाम्स आगे कर दें। ठीक है, अब सारे एग्जाम्स आगे करने का मकसद, जो सबसे बड़ा लॉस होता है वो ओ लेवल के O2 के बच्चों का और A2 के बच्चों का होता है। चलिए, AS लेवल वाले बच्चे या ग्रेड 10 के बच्चे, उनको इतना नुकसान नहीं होता बिकॉज दे हैव अनदर ईयर टू गो। इट्स द परफेक्ट, O परफेक्ट। लेवल
final kids and the A2 kids that were suffering. So they had to find some solution. And, you know, as I said, you also saying the same thing, you know, it wasn't fair, they didn't give an exam and they got a result, good or bad. It wasn't fair. And yeah, I agree with you to a certain extent. It's not fair, but it's the best we can do given the circumstances. And even then, it's not perfect. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो लेकिन सर बात दरअसल ये है कि व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप, क्या स्टेप क्या होगा अगर एक बच्चे को मजा नहीं आ रहा अपने रिजल्ट्स को देखने के बाद, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आप इसका? देखिए, देयर डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। O level के बच्चे के लिए I would say for O level kids who did not receive a result you know that they felt was acceptable or adequate, I think they're still okay, because as an A level principal I know this was not their fault, it was not their school's fault, it was not their teacher's fault. Even with the private students, उन बेचारों के साथ तो बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, because they couldn't even get the evidence based grades. And you know, if you look at what Southshore is doing, and I'm sure others are doing it as well, कि हम private candidates के साथ बहुत cooperate करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको एक जगह मिले. And we'll talk about that more. I don't want to get into that right away. But basically the idea is कि O level के बच्चों के लिए इतना मसला नहीं होना चाहिए, because A levels will take them if they have evidence-based grades. We will try to look at their past record on the transcript, look at some recommendations from the school, and try to help them that way. With AS levels, जी जी तो मैं अभी इस चीज पे आते हैं। पर्टिकुलरली हमारे पास एक सवाल बहुत ज्यादा बच्चों का आ रहा है कि लेट्स सपोज कि कुछ बच्चे, लेट्स सपोज जिनका यू आ गया, लेट्स सपोज, ठीक है, तो वो अक्टूबर नवंबर में जाएंगे। और सबसे ज्यादा सवाल ये आ रहा है, हमारे पास अब्दुल वहीद साहब भी हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में एग्जाम्स होंगे या नहीं, ये बता दें सर बस आप इन्हें। यार, अगर मुझे इसका जवाब होता है ना, I'd be a very rich man right now. देखिए, again, everybody is trying their best to get October, November exams done. My conversations with the CAIE, you know, they are desperate because they know, you know, everybody wants to blame CAIE and British Council for what happened. But you have to understand, उन लोगों को भी यही जज्बा है कि वो एग्जाम्स करें, because that's their profession. They're professionals. ये उनका काम है, जैसे आपका काम है पढ़ाना, मेरा काम है. तो they are desperate to have these exams, and if at all possible, they will have them. There's no doubt in my लेकिन mind. सर लोगों को लग रहा है ये तो पैसे कमाने के लिए एग्जाम करें, हमें फेल इसलिए किया कि इन्होंने पैसे कमाने हैं। व्हाट डू यू थिंक सर? यार देखो, अगर पैसे कमाने की बात होती, to be very frank, we're not dealing with young children, we're dealing with adults who are listening to this broadcast. अगर ऐसी बात होती तो वो ये कहते कि जी हम एग्जाम्स नहीं करेंगे मई जून में, हम पैसे भी नहीं वापस करेंगे, because this was a force majeure, which is a, you know, which in any contract, as you well know, कि ऐसी कोई कैलामिटी आ जाए तो वो लोग इंश्योरेंस वाले भी मना कर देते कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, राइट? तो they could have done that. They didn't do that. They did everything in their power, and I'm not defending them. I don't think it was a perfect process, but I think under the circumstances, I think, you know, nothing is perfect in the world. I'm not perfect, you're not perfect. और अगर हम दूसरे हेड पे देखें तो इन्होंने जो 15% जो बच्चों को रिटर्न दिया है, जो रिवर्ट दिया है बच्चों को, जिनको एक्चुअली रिफंड, एक तरह से रिफंड ही कह सकते हैं कि 15% जो फीस था उन्होंने रिटर्न किया है। तो अब क्या कहते हैं, ये भी तो एक चीज नजर आ रही है ना कि यार वो तो हमें एक तरह से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहते हैं सर आप? देखिए, I don't deal with the money situation. My focus is my students and student life and academics and the thing. I leave the money to the accountants and let them deal with it. So I don't know too much. I know that there is some form of a refund going on. My main concern is the well-being of my students with respect to the academics, their development as young people and things like that. So yeah, I mean, I think it's a good thing, but I don't subscribe to the message that, you know, they're just in it for the money. I think, yes, you know, I work, I earn, you earn, everybody earns. We have to make a livelihood, and I think they do too. Yes, of course, you can debate कि वो ज़्यादा है, कम है, whatever. But I don't agree with the fact that
सिर्फ पैसे बनाने के लिए बिल्कुल उन्होंने ये बिल्कुल। किया, आई डोंट थिंक सो। सर हमें माशाल्लाह बहुत सारे लोग इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त लाइव सेशन के अंदर, तो मैं उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि हम हमारी बात सुनने के लिए यहाँ मौजूद हैं। और बहुत सारे लोग हमें कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे सवालात कर रहे हैं। तो मैं एक बात उन तमाम लोगों से करना चाहूंगा कि मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपके तमाम आंसर्स को कम से कम खुद आंसर कर सकूं, या सर राहील से साथ जरूर उसका आंसर ले सकूं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और कुछ सवालात जो मैं आपसे सर करना चाहूंगा वो ये है कि सर अब मुझे बताइए कि A2 स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ है उनको क्या करना चाहिए, फिर हम AS के बारे में बात करेंगे, फिर हम O लेवल्स के बारे में बात करेंगे। नो इशू। देखिए जी, A2 students have the same situation as O level students. The only difference बिल्कुल is that now they're dealing with universities and colleges, whether it's in Pakistan or abroad. And I think everybody is trying to take some sort of middle ground. People have dropped their requirements. Just America, you never thought that the best universities would drop the बिल्कुल। SAT requirement. As you know, I was part of Georgetown University for many years in the admissions, and परफेक्ट, जबरदस्त। SAT was a requirement. अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कह रही हैं कि भाई हम SAT नहीं देखेंगे, हम बहुत सारी और चीज़ें देखेंगे. People, बिल्कुल including IBA and others, have said that we'll take lower grades. So a lot of people are making accommodations because they understand that these students have gone through a really difficult time, और उनकी गलती लेकिन नहीं, you know. लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अभी रिसेंटली मेरे नजर से एक दो ईमेल्स गुजरी हैं जिसमें CBM और IBA कह रहे हैं कि हम तो भाई, हम अगर हमारी रिक्वायरमेंट BBC है या CCB है, तो आपके पास अगर बेशक उस रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपके पास, तो आप हम एडमिशन नहीं ले सकते। अगर आपको CI ने लेट्स सपोज आपका AA था और उन्होंने D कर दिया है, तो आपको दोबारा अक्टूबर नवंबर में बैठना पड़ेगा हमारे पास, आप हमारी रिक्वायरमेंट लेके आए। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर, ऐसा क्या सिनेरियो? क्योंकि मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस तरह के अंदर कुछ ना कुछ लीनियंसी दिखाई जाएगी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो पिछले एक दो दिनों में मैंने कुछ ईमेल्स देखी हैं जिससे ये नजर आ रहा है कि उन्होंने तो अपनी पॉलिसी इस तरह की रखी हुई है सर। देखिए, आई थिंक इवेंचुअली वंस दिस इज वेरी न्यू टू देम आल्सो, राइट? अभी 2-3 दिन हुए हैं where they're facing these issues. And बिल्कुल I think a lot of principals, including myself, are going to reach out in support of our children. I have students as well बिल्कुल who need help with CBM and IBA and other places. And I know बिल्कुल that I will be reaching out to them and make the case that our assessment of them, given what we know for 2 years that they were part of Southshore, कि हम क्या समझते हैं उनकी assessment होनी चाहिए थी. And we can't share what the बिल्कुल predicted grades we sent to Cambridge was because that's a confidential thing for our children. But we will share with them परफेक्ट। what our teachers said कि हम क्या समझते हैं. And based on that, it is my hope that हाँ ठीक है, if it's very far away from their requirement, then maybe they won't consider it. But if it's not that far away, maybe they can take 1 or 2 different approaches. One is to say कि चलो हमने 2 C's या 3 C's मांगे थे, एक D आ गया, कोई बात नहीं. Or they'll say कि चले हम आपको provisionally admission देते हैं and you have to retake that D and turn it into a C within the next year. And that's a very reasonable way to go, and I will certainly discuss that with them. This is very, as I said, it's very early in the game right now. Results came on the 11th, and we're now seeing some of these things pop up. And so I will be dealing with it, and I'm sure all of us will try to आई come थिंक to a सर अब हम solution. अगर हम AS की बात करें, तो AS वालों के लिए तो इतना मसला नहीं है, उसमें मैं समझता हूँ कि ज्यादा बात भी नहीं करनी चाहिए कि उन्होंने ये बात क्लियर है ना कि अगर AS में किसी बच्चे का U है तो उसको अब दोबारा रीटेक करने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ A2 देना पड़ेगा। व्हाट डू यू थिंक? देखें, यस एंड नो अब्दुल्ला. देखें, एएस के बच्चों के लिए ये बहुत ख़तरनाक टाइम है बिकॉज बिल्कुल बिल्कुल सही है कि उनका एएस का ग्रेड इस वक्त जो वो ग्रेड उनके हाथ में है उसका सिर्फ ये मकसद है टू शो दैट दे हैव कंप्लीटेड एन एएस लेवल. ठीक है, दैट जस्ट बिल्कुल शोज बिल्कुल दैट. ठीक है, it is not carried forward, so their entire A level grade depends on the A2. Now, बिल्कुल the बिल्कुल problem, and whether you got a U or an A, it doesn't matter. You can still register for the A2s, and if you do well in your A2 year, alhamdulillah, you will get a good grade. लेकिन परफेक्ट परफेक्ट आपको पता है ह्यूमन नेचर होती है कि जब कोई चीज़ आसानी से होती है और आप ट्रबल में नहीं होते और प्रेशर में नहीं होते ना, तो आप यू टेक इट ईजी. एंड व्हाट आई डोंट वांट एएस किड्स टू डू नाउ इज जस्ट बिकॉज दे फील कि हमें गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड मिल गया, वी गोइंग टू टेक इट ईजी. Now the pressure is on because now if you mess up in your A2s, then you've really done बिल्कुल yourself a disservice because आपको एक चांस मिला है, एक गोल्डन चांस मिला है.
and your AS result is very important because आपका वो एक academic record है. चले even if you got a U, at least it shows कि आपने AS अपना complete कर दिया है basic, and everybody knows कि वो U real result नहीं है, that's an estimated ठीक है, result, ये and सबसे this is इम्पोर्टेंट the चीज़ है कि ये important. बहुत सारे बच्चों का सवाल ये था कि इफ दे गॉट यू इन एएस लेवल, जबकि उन्होंने एग्जाम भी नहीं दिया, तो क्या है इनका फाइनल ग्रेड होगा? तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। सर, अब आते हैं हम अपने ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स के हवाले से कि अब कहा ये जा रहा है कि हमारा जो O2 स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि जो पाकिस्तान स्टडी इस्लामियात और उर्दू का एग्जाम देते हैं, उनका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया। जबकि अगर हम बात करें O3 के हवाले से, जो नॉर्मली बच्चे 5 या मोर देन 5 सब्जेक्ट्स देते हैं, जिसके अंदर उनके आपके पर्टिकुलर जो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे साइंसेज या हो गया, कॉमर्स हो गया, वो इंग्लिश और मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। ठीक है, तो सर आप क्या कहते हैं सर इस हवाले से? क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको क्या लगता है कि ओ लेवल्स वालों को क्या करना चाहिए इस सिनेरियो में? देखिए, अगेन आई थिंक इट्स अ स्टैंडर्ड थिंग, जिसका रिजल्ट रीजनेबल है, आई थिंक दे कैन गो फॉरवर्ड, उनको कोई मसला नहीं होगा, एंड इवन द वंस दैट गॉट स्लाइटली वीकर रिजल्ट्स, इट्स नॉट दैट मच ऑफ प्रॉब्लम. व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि उन्होंने किया किस तरह है. फॉर एवरी स्कूल उन्होंने पुराना डेटा देखा, फॉर एवरी सब्जेक्ट उन्होंने डेटा देखा, और उसके बेसिस पे उन्होंने एक एनालिसिस करके कहा कि इतने सारे लोग एज होंगे, इतने ए स्टार्स होंगे, इतने बीज होंगे, and sometimes it gave an advantage to a student, and other times it didn't, because they weren't dealing with real things, they were dealing with estimates and projections and things like that. So obviously it was going to be a complex process that's not going to be exact. So I would say to O2 kids, don't get too happy if you got good grades, and don't get too sad if your grades weren't as good as you thought they'd be. Prove yourself in the A level, and inshallah all A level colleges including Southshore will make an effort to accommodate these kids. The worry I have is for private kids, whether they were O level or AS level, उनके लिए मैं बहुत परेशान हूँ, because they are in a real bind. And going forward, I really hope that, you know, they can find a different path, because staying private will always be a sword hanging on their head. And I really think that they need to reconsider that. व्हाई यू आर थिंकिंग कि प्राइवेट कैंडिडेट के लिए, एज अ प्राइवेट कैंडिडेट कंटिन्यू करना एक थ्रेट है इस वक्त? देखिए, बात यह है कि मैंने पहले भी कहा है कि आई थिंक प्राइवेट कैंडिडेट्स आर वेरी लकी दैट दे हैव ग्रेट टीचर्स लाइक यू, एंड यू नो माय फ्रेंड्स लाइक Zai and Waqas and you know, many others that are friends, and I have great respect for all of you that work with these young people who are private for a variety of reasons. The problem is, एक सबक हमें अभी मिल गया है कि whenever the situation is not normal or less than ideal, they will find themselves in a position like this where they are behind other students, and that's not fair to any kid. And my point is that if we ever have to face this again, let's say October November mein exam nahi hote, you know, let's say if there's some other issue, any issue that comes, it's very hard for an individual teacher or an individual student to uh, present anything of substance to CAIE, whereas as a school, as an institution, जैसे साउथ शोर 16 साल से है, तो हम कुछ दे सकते हैं CAIU को, तो बिल्कुल बिल्कुल एविडेंस है सर, हमारे पास. सर आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का सवाल ये है कि हम कॉलेज फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम क्या देखिए करें? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ. कल मैं बैठा हुआ था और मैंने कहा, यार, आई हैव सेड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट लाइक दिस अबाउट प्राइवेट किड्स कि यार, you know, they should join a college and this and that, and I said, yeah, and that's a problem for them, finances. तो मैंने अपने स्टाफ से बात की, मैंने कहा, यार, and you know, I don't deal with the money, so I went to my chief person who's a finance and person, and I said, yeah, what if we said something special for the private kids? और हमने पोस्ट किया कि अगर कोई बच्चा प्राइवेट है, उसको हम एडमिशन फी 50% ऑफ कर देंगे. दैट्स 80,000 रुपीज राइट देयर दैट वी आर सेइंग वी आर नॉट गोइंग टू टेक फ्रॉम यू. ठीक है, एंड इफ यू आर एलिजिबल फॉर अदर स्कॉलरशिप्स, वो हम देख लेंगे. बट वी सेड दैट वी बैक्ड अप आवर थिंग विद financial. So I understand that. And look, we offer financial assistance, others do as well. We give merit-based aid. We will help as many people as we can. This is not a situation where one looks at money, one looks more at what we can do for young people and try to help these people so that they're never in the way. And it puts teachers in a bad spot too. Teacher kya kare yaar?
वो अपनी पूरी मेहनत करके they do their best and they're wonderful teachers. But unfortunately, they can't give CIE that evidence that a school can because of the structure of the place. You know, in countries other than Pakistan, private students are a very minor proportion. Pakistan is an unusual situation where there are so many private students. लेकिन सर अगर हम इस सिनेरियो को थोड़ा-सा डिफरेंट एंगल पे देखते हैं, तो हमारे यहाँ पे अगर आप दूसरी कंट्रीज़ की एग्ज़ाम्पल लें, तो जो हमारा सीआई सिस्टम है, वहाँ की ओवरऑल मार्केट शेयर का बहुत कम प्रोपोर्शन उनके पास है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं, क्योंकि उन दूसरी कंट्रीज़ के जो लोकल एजुकेशन सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूँकि हमारा लोकल एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट ये होता है कि हमारे यहाँ लोअर मिडल क्लास या मिडल क्लास का एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन हमारे ए लेवल्स की तरफ आता है। और वो ये समझते हैं कि वो एक मैक्सिमम जो अमाउंट एक बच्चे पे स्पेंड कर सकते हैं, वो 10 से 12,000 रुपए है, ठीक है? पर मंथ है, 10 टू 12,000 रुपीज़ से ज़्यादा वो स्पेंड नहीं कर सकते एक बच्चे की एजुकेशन के ऊपर। तो आप क्या समझते हैं, क्या आपका इंस्टीट्यूशन ऐसे बच्चों को कोई सपोर्ट प्रोवाइड, कोई फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करने के लिए एग्री है? Abdullah, I don't want to just make this about South Shore, but since you asked the question, I'll answer it. Okay. I have taken kids whose parents, made virtually no money, and we've given full scholarships to those children. Not because they had straight A's, but because they deserved that financial support. That has been the way that South Shore has handled things. And in fact, if you know the history of South Shore, until about 6 or 7 years ago, the only way to get a scholarship at South Shore was to show that your family needed financial support. हम लोग merit पे financial aid नहीं देते थे. And I think that was my training from Georgetown because I worked with Georgetown and Harvard and all these colleges. And वहाँ पे आपको सिर्फ need based पे. Harvard does not give, or Georgetown does not give financial aid based on merit because every student is meritorious. वो need पे देते थे. हमने भी ये किया था बहुत सालों तक. But then obviously certain things came about in the market and we said we're all right. You know, बच्चे आते थे कि सर मेरे 10 एज हैं और आप मुझे स्कॉलरशिप नहीं दे रहे. मैं कहता था यार that's not how we do it. If your family needs the money, we'll support you. तो अभी भी हमारे पास अगर आप देखें साउथ शोर का प्रोफाइल एंड आप पढ़ाते हैं साउथ शोर में, आपको पता है हमारे पास हर किस्म का बच्चा है. एंड अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज़ आवर गोल. वी डोंट एवर वांट कि कोई बच्चा साउथ शोर, या आई वुड वांट कि कोई भी कॉलेज ऐसा ना हो जहां वो बच्चा जा ना सके simply due to money. Money is not वेरी गुड थिंग. इट्स अ वेरी गुड थिंग सर कि यानी कि अब जो बच्चे जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं और वो ये इतना ज़्यादा उनको लगता है कि वो अपनी फी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको लगता है कि कॉलेज की जो एडमिशन है उसका इन्वायरमेंट हिडन करिकुलम की एक बहुत बड़ी कॉस्ट है, तो यानी कि एक अच्छा चांस है कि वो साउथ ज्वाइन करके इस चीज़ को भी मैनेज कर सकते हैं. सर अब आते हैं थोड़े से क्वेश्चंस के ऊपर. कहते हैं कि सीओडी मॉन्स्टर कहते हैं हमसे कि एज अ प्राइवेट स्टूडेंट आई हैड सीन एएस एंड नाउ दे हैव दे यानी कि उन्होंने दिया है, दे हैव नहीं लिखा होना चाहिए, दे हैव यू इन मैथमेटिक्स इन A2, माय एयर इज वेस्टेड एनीवे. व्हाट डू यू थिंक सर, क्या किया जाए इनके लिए? ये इनका CAS में था लेकिन A2 के अंदर इनको AU दे दिया गया है और ये समझते हैं कि इनका साल जाया हो गया. तो इनके लिए क्या ऑप्शन है, क्या अपील का ऑप्शन इनके लिए खुला हुआ है, क्या इनको क्या करना चाहिए? देखिए अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है, अपील इज फॉर द होल कोहॉर्ट. यानी स्कूल जैसे अगर मैं चाहूँ अपील करना तो मुझे एक, लेट्स टेक ये मैथ का सिचुएशन, अगर ये मेरा बच्चा होता तो इसके लिए मुझे पूरे मैथ के रिजल्ट को अपील करना पड़ता. ये मैं कहूँ कि प्रोसेस में कोई मसला था तो उस वजह से आप इसको, और मुझे एविडेंस देनी पड़ेगी कि भाई देखें ये मुझे लगता है कि आपके प्रोसेस ने गलती की है हमारे पुराने ग्रेड्स देख के और हमारे प्रिडिक्टेड ग्रेड्स देख के और हमारी रैंकिंग देख के, कि based on what I sent and what our history is, you've made a mistake in the process. And then what they do is they reevaluate grades for every child in math. It's not just one person. वो हर बच्चे का evaluate करेंगे and in all likelihood it will come back the same, because unless I can prove to them कि कोई बहुत बड़ी गलती हुई है कि उन्होंने जी सारे बच्चों के साथ ज्यादती कर दी है, तो ये याद रखें कि this is a process that was inexact, but it was a complex process and we have the ability to see that. लेकिन सर यानी कि A2 का जो बच्चा है, ठीक है, A2 का वो बच्चा जिससे प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे, तो वो उसके पास अभी कोई फिलहाल चांस नहीं है जब तक वो कोई CI कोई प्रोसेस अनाउंस नहीं कर देता कि वो एज ए इंडिविजुअल किस तरह से कैटर करेगा. ऐसा ही है सर? हाँ, आई थिंक सो. एंड उसमें मसला ये है कि वहाँ यूनिवर्सिटी से बात करें डायरेक्ट कि देखिए मेरे AS के ग्रेड आपके सामने है, ठीक है, और ऐसा नहीं हो सकता कि मैं C से डायरेक्ट U पे चला जाता अगर मैं एग्जाम देता.
ठीक है, दूसरी बात ये है, चलें आप कहते हैं शायद मैं यू पे चला जाता, मैं कहता हूँ मेरा ए आ जाता, सो लेट्स जस्ट एग्री बिल्कुल दैट यू गिव मी अ चांस, आप मुझे कंडीशनल एडमिशन दे दें, take me into the university, give me a year or 6 months to prove myself both at the university and to retake the result, and that's very reasonable. And maybe support from a teacher who taught that student, and one can do that. Look, there are many universities around Pakistan and other places. बिल्कुल। ये एक होता है सवाल लोगों इसी हवाले से, हाँ, बिल्कुल, एक सवाल इसी हवाले से टाइगर नेशन साहब कहते हैं, सर राहील, कैन रिकमेंडेशन वर्क फॉर यूनिवर्सिटी एडमिशंस इन पाकिस्तान इफ द ग्रेड्स डू नॉट मीट द यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया विद अ माइनर मार्जिन? देखिए, that depends on the relationship between your institution and the admissions people, and also obviously individual relationships. Like I have individual relationships, and I know other principals also do, but I also have a track record. तो अगर आपके बहुत सारे बच्चे IBA गए हैं, जैसे हमारे बहुत सारे बच्चे IBA गए हैं, या आगा खान गए हैं, CBM गए हैं, या जहाँ भी गए हैं, तो हम उनसे we can say कि our kids, what our kids are like, so take that into account. Also, we can talk about individuals. So I do think it makes a difference. Whether it will solve the issue and वो अपनी mind change कर देंगे, देखें वो तो एक crystal ball type situation है, वो तो मुझे भी नहीं पता, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं एक फोन उठा के just because I know somebody at IBA or CBM, I actually personally know a lot of deans of admission in the US, और वो मेरे दोस्त हैं, लेकिन I know that I can't pick up the phone and call them and say, "Acha ji, Bill Fitzsimmons at Harvard, we're friends and we went to basketball games together. So now you give this kid admission because he missed his predicted grade by so and so, or calling somebody at Exeter." ऐसा नहीं होता. But what they will do is, if they respect your opinion and they respect what evidence you give, and how you back it up, then maybe they will listen. ओके, परफेक्ट। सर एक सवाल ज़ोया अब्बास साहिबा का है, कैन वी अपील द रिजल्ट्स इफ देयर इज अ मेजर डिफरेंस इन द मॉक ग्रेड्स एंड द सीआई ग्रेड्स? वही वाली बात मैं सेकंड करूंगा कि बेटा आप एज एन इंडिविजुअल आप अपील नहीं कर सकते, आपके पूरे इंस्टीट्यूशन को अपील करना होगा इस हवाले से। लेकिन तो वो एक बड़ा प्रोसेस है फिलहाल, लेकिन अभी जब तक सीआई की कोई अपडेट इस हवाले से नहीं आ जाती कि वो इंडिविजुअल को कैसे केटर करेंगे, जैसे कि अभी पूरी दुनिया में नजर आ रहा है कि कुछ मुजाहरे हो रहे हैं, कुछ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। स्कॉटलैंड के अंदर अपडेट आई, बीबीसी ने पिछले दिनों रिपोर्ट किया है, पाकिस्तान के कुछ चैनल से रिपोर्ट किया है इस हवाले से। तो हो सकता ये है कि कोई ना कोई प्रोसेस आ जाए, लेकिन फिलहाल ऐसे बच्चे जिनका यू आ गया है उनको हम यही रिकमेंड करेंगे कि यू नीड टू गो फॉर द अक्टूबर नवंबर एग्जाम्स। बहुत बहुत माजरत के साथ। जी सर, देखिए, कुछ कह रहे मैं थे आप? सिर्फ एक चीज कहूंगा कि अगर आपका मॉक रिजल्ट, इफ योर मॉक रिजल्ट वाज बेटर देन योर ग्रेड, I would strongly recommend that you get your school to write on your behalf to the university, including the mock result, saying that, look, the mock said this and the result came back this, and we know that it was a standardization process, so किसी ना किसी बच्चे का तो result गिराना था. And if you look at what CIE said, they said that the predicted grades this year compared to years past were higher by an average of one full grade. So they had to adjust down in many cases. So a student can make that case to a university कि भाई, look at my mock result, and maybe they'll take that into account. In fact, in the UK, they are now allowing mock results as an alternative to the A level result, and unfortunately not in this country yet, but I do think that admissions officers will take that into account, because who doesn't want good kids यार? अगर एक अच्छा बच्चा है, आप उसके मॉक रिजल्ट में देख सकते हैं, उसके एएस रिजल्ट में देख सकते हैं कि वो अच्छा बच्चा है, तो आप उसके सामने दीवार क्यों खड़ी करेंगे? आई डोंट डू दैट विद द ओ लेवल किड्स। अगर मुझे नजर आता है कि एक बच्चे में पोटेंशियल है, कोई बात नहीं, अगर एक एग्जाम, यार इंसान है, एग्जाम जो भी देता है बच्चा वो भी खराब कर सकता है, तो व्हाई होल्ड दैट अगेंस्ट देम? एक रिजल्ट से एक बच्चा डिफाइन नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनीला वसीम कह रही हैं, गुड ऑफर फॉर द प्राइवेट स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम मिस अनीला। अलीजा वसीम खान कहती हैं, आई एम अ प्राइवेट स्टूडेंट एंड वाज ऑल सेट टू गेट इनटू द यूनिवर्सिटी। आई हैड डी इन एएस एंड दे गिव मी यू इन ए2। So sorry, and I have already taken a gap year. I'm feeling exhausted. हमारे साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, मुझसे बहुत सारे लोग राब्ता करते हैं इस हवाले से कि उनको ऐसा लग रहा है उनकी दुनिया खत्म हो रही है। सर कुछ कहना चाहेंगे अलीजा वसीम खान के लिए इनके केस के हवाले से? Yeah, the one thing, and I know it's very hard for these young people right now, but what you have to understand is
that जिंदगी और दुनिया बहुत बड़ी है, right? And दिल बड़ा रखें, हौसला रखें. These things in 10 years will not matter to you, because you know what, you are going to all be strong enough to ride this storm. You're going to come out the other end. There will be some solution. ठीक है, मुश्किलात होंगी, you don't feel good about it, सब कुछ, बट दुनिया चलती है. बहुत सारी चीजें हुई हैं. If you look at history, there have been a lot of terrible things that happened in life, but yet the world somehow survives, and you will survive too. There are many people out there. You know, you can talk to your teachers, you can talk to principals, you can talk to people, and people will step up, because you know what, everybody who works in education works because they want to help young people. And so what I मैं say तो to कहता you is, सर, ठीक है जी. तो मैं एक छोटी सी बात अलीजा से कहना चाहूंगा. अलीजा देखिए, बात सारी है, उन्होंने आपको बगैर आपके एग्जाम लिए आपको यू दे दिया ना. अब 2 या 3 महीने बाकी हैं अक्टूबर नवंबर में, थोड़ी एफर्ट करो और इनको साबित करो, इनके मुंह पे मारो कि तुम्हारा यू, इनको बताओ कि तुम यू डिजर्व नहीं करते थे, तुम कम से कम अपना एएस वाला रिजल्ट तो डिजर्व करते थे. तो परेशान होने की कोई बात नहीं है. अभी सिर्फ आपने 2 महीने एफर्ट करनी है एंड यू विल गेट इंशाल्लाह ताला सिमिलर ग्रेड. और बहुत अच्छी बात अलीजा, मैं आपको बताऊं, इस पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपके अक्टूबर नवंबर के एग्जाम्स को एक्सेप्ट कर रही हैं. इनफैक्ट जाबिस एक्सेप्ट कर रहा है, सीबीएम एक्सेप्ट कर रहा है, आई थिंक आईबीए ने भी ये बात अनाउंस किया कि हम अक्टूबर नवंबर को एंटरटेन करेंगे. तो इट्स अ वेरी गुड थिंग. आपका साल जाया नहीं होगा. तो आपने ऑलरेडी गैप ईयर लिया हुआ, तो उतनी टेंशन की कोई बात नहीं है. तो वो ये है कि आप अक्टूबर नवंबर में एग्जाम दो, यूनिवर्सिटी में बैठें. तो ये सिलसिला है सर. आगे बढ़े सर, थोड़ा सा कहते हैं. अच्छा, एक सवाल अब्दुल्ला खालिद साहब कहते हैं कि अक्टूबर नवंबर में हमें रीटेक एग्जाम देने चाहिए या मई जून में सर? I think there's no one size fits all solution. I think वो हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है. और सबसे अच्छी गाइडेंस जो मिल सकती है, दैट इज फ्रॉम द टीचर. So whoever taught you in that particular subject, not the principal, not me. I mean, when my kids come to me, you know as well as I do, मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ जाके अपने उस्ताद से बात करो. क्यों? ना मैंने पढ़ाया है, ठीक है, जस्ट बिकॉज मेरे नाम के सामने प्रिंसिपल लिखा हुआ है doesn't mean I know everything. My teachers know infinitely more than I do about individual students and how they will perform and what they need. That's the beauty of having, great teachers, that they can guide students properly. So I would say the first thing you do is you have a conversation with your teacher. They will advise you कि भाई अक्टूबर नवंबर में देना है या मई जून में देना है, because मई जून में, depending on whether you're an A1 or A2, May June में means you'll be giving accelerated, and that's not a bad thing. For some courses that works. Obviously, for one of your courses like media studies, it doesn't work so well. But I think the teachers are the ones, and in fact, you know as well as I do. आपसे भी मैं advice लेता हूँ ना. जब मेरे बच्चे कहते हैं मुझे मीडिया स्टडीज एक्सेलरेटेड देना है, मैं किसके पास जाता हूँ? मैं आपके पास आता हूँ. मैं हाँ नहीं करता. मैं सबसे पहले कहता हूँ सर अब्दुल्ला से बात करते हैं, मुझे नहीं पता. सर थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्फिडेंस सर, थैंक यू सो मच. सीओडी मोहन सर कहते हैं, डू आई हैव टू अपेयर, ये बड़ा सर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पहले भी कई मतलब हो चुका है सवाल. डू आई हैव टू अपेयर फॉर AS2 नाउ इफ आई हैव गॉट यू इन A2? अगर मेरा A2 में यू आया है तो मुझे AS भी देना पड़ेगा या सिर्फ A2 के पेपर्स देने पड़ेंगे सर? देखें, अगर आपने AS दिया है इन जून 2019, ठीक है, if you've given AS in June 2019 and A2 was registered in this 2020, then I don't think you'll have to do that, because वैसे भी, for example, जो private candidates हैं उन्होंने भी जून में दिया था और उनको by force आगे किया गया AS के बच्चों को to this time for many candidates. अगर A2 के बच्चे ने evidence based के नहीं लिया, प्राइवेट ने या even school enrolled बच्चों ने कुछ ने नहीं लिए evidence based grades, so they can still give them. So you still have the chance to retake the exam in June. The more difficult question is कि अगर आप अगले साल देते हैं मई जून में A2 after getting the U, that may be a tougher question, and that will have to be clarified from the British Council. But अक्टूबर नवंबर तक मेरे ख्याल से आपको पूरा नहीं देना पड़ेगा. मई जून का मैं आपको कह नहीं सकता. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सामिया नाराज हो रही है, सिमरा अहमद नाराज हो रही है. सिमरा, आपके सवाल पे मैं थोड़ी देर में आऊंगा, ठीक है. सामिया पराचा कह रही हैं कि अस्सलाम वालेकुम मैम, many schools did not include the mock exam in the compiled grades sent to CIE, that because they had the mocks in June. देखिए,
I won't talk about other schools. Please keep this in mind. और मैं ये पूरी बात एक 5 मिनट दूंगा करने के लिए. देखें, it's very easy for us in this time to bash schools, to bash British Council, to bash teachers or bash principals, or हम एक दूसरे को बुरा भला कह सकते हैं, एक स्कूल दूसरे को कह सकता है, कुछ भी कर सकते हैं. That is not productive. And it's not real, because you know as well as I do, सब मेहनत कर रहे हैं, सब कोशिश कर रहे हैं. And I don't think anybody did anything purposely to hurt anybody. I think they did the best they can with what they had, and I think we have to remember that. So ठीक है, you can feel bad about things, but बाजमात डेमोन्स्ट्रेशन करना और CIE को बुरे भला कहना, या अपने स्कूल से कहना कि जी आपने हमें गलत ग्रेड्स दे दिए और ऐसा नहीं किया, आपने वैसा नहीं किया. किसी ने किसी के लिए बुरा नहीं सोचा था, किसी ने कोशिश नहीं, ये नहीं कि कोशिश नहीं की, हम सब ने कोशिश की. I tried, and yes, in some cases I know my kids didn't get what they deserved or should have gotten, but you can't get angry. What you do is you find solutions and you move forward. Anger never resolved the problem. And so I would say to people कि ठीक है, अगर मॉक्स के रिजल्ट किसी स्कूल ने इंक्लूड नहीं किए, ठीक है, they found other ways to give evidence, and that's okay. There was no hard and fast rule from CIE कि आपको क्या देना है. उन्होंने कहा भाई हमें कुछ चाहिए और फिर हम एविडेंस मांगेंगे. तो हो सकता है कि अगर उन स्कूलों से वो एविडेंस मांगी उन्होंने, तो उन्होंने जून में दे दी उन्हें. आपको नहीं पता ये. You don't know, because we were not allowed to discuss what happened with predicted grades and ranks with students and parents, and in fact my teachers even. So हो सकता है कि वो जून के मॉक्स के रिजल्ट स्कूल ने एज एविडेंस दिया. साउथ शोर से कोई एविडेंस नहीं मांगी, लेकिन दूसरे स्कूलों से आई नो मांगी है. एंड सो मे बी उन स्कूलों को उन्होंने कहा कि भाई आप मॉक्स की एविडेंस दे दें हमें, अगर आपने जून में मॉक्स किए हैं. So I think it's easy to put targets on people and try to bring them down, but let's not do that. Yeah, I think we're all better than that as human beings. परफेक्ट सर, आगे बढ़ते हैं. अनिला वसीम साहबा कह रही हैं कि स्टूडेंट्स आस्क मी इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी दैट पाकिस्तान's रिजल्ट विल बी रिवाइज्ड बाय CIE लाइक दोज ऑफ UK एंड स्कॉटलैंड. देखिए, सबसे पहली बात ये, I mean, again, maybe I'm wrong and I'm not God, so I don't know everything. As far as I know, I don't think the results per se are being revised. I think what's happening is that some processes that are doing a sort of an end run around the result, यानी जैसे बजाय आपका जो C आया था आपके रिजल्ट पे, उसके बजाय वो मॉक का B काउंट कर रहे हैं. My impression is that's what's happening. And as far as Pakistan goes, again, I don't think there are going to be changes in any result. What I do think needs to happen is universities and people like me, when we're dealing with A-level admissions for O-level kids, we need to take a broader view and say that children are not just grades, which I always do. सब कहते हैं पागल आदमी किसी को भी ले लेता है. Because when I look at children, I don't just see the grade. I see much more than that. And I think the universities will have to do more of that. A-level principals and admissions people will have to do more of that, have to look past the individual grades. So no, I don't think changes are going to be made. What I do think will happen is that, for example, I might look at child's mock grade or school transcripts, और इसीलिए मैं पागलों की तरह सबको कहता रहता हूँ, भाई जब भी मैं स्कूल में जाता हूँ मैं कहता हूँ अपने स्कूल के रिजल्ट सही रखो, 9, 10, 11 में सही रखो. साउथ शोर में आपको पता है आप पढ़ाते हैं, मैं बच्चों से कहता हूँ भाई पूरे साल मेहनत करो, डोंट जस्ट डू इट फॉर द एग्जाम्स. क्यों? इस साल सबक मिल गया ना, पूरे साल काम नहीं किया तो हम आपको एविडेंस बेस्ड ग्रेड में कितना अच्छा रिजल्ट दे सकेंगे, राइट? सो आई थिंक दैट इसमें जरा थोड़ा एहतियात करना पड़ता है. बिल्कुल, हमारे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी-जल्दी आंसर करें इन तमाम सवालात को. कि व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स हु वर्क्ड हार्ड टू गेट गुड ग्रेड्स इन AS बट गॉट देयर ग्रेड्स ड्रॉप फॉर द लिटरली नो रीजन. A2 ग्रेड्स अफेक्ट योर फ्यूचर. लॉल, LOL. ठीक है, सिमरा अहमद कह रही हैं, तो हम क्या कर सकते हैं भाई? ये रियलिटी है, हकीकत है जी. देखिए, AS के बच्चों के लिए मैं ये कहूँगा, देखें, whatever grade you got in AS, that is very important because it shows कि आपने AS complete किया. लेकिन आपका final A-level grade आपके हाथों में. It is all in your hands, and of course, you need to listen to what your teachers are saying to you, what your counselors, what your seniors who are in your life, the adults are telling you.
मेहनत करो इस साल, and inshallah, your A level grade will be what you deserve. So don't waste this opportunity that you have, that the final year O level kids, the O3 kids, and the A2 kids didn't have. You've got it. तो उसको जाया नहीं करना. परफेक्ट परफेक्ट सर, आगे बढ़ते हैं। अब्दुल्ला खालिद साहब, आई फील रियली सॉरी फॉर यू। अब्दुल्ला खालिद, मई जून में अगर देखें, अब्दुल्ला खालिद अगर आप मई जून में देंगे तो आपके साल ज़ाया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं ब्रदर। आप अक्टूबर नवंबर में देंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी जनवरी में एडमिशन दे देगी, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है सिमरन अहमद, मैंने आपके सवाल इग्नोर नहीं किया, आपके सवाल का जवाब अभी अभी दिया है। ठीक है, जॉनसन साहब कहते हैं कि विल अक्टूबर नवंबर 2020 टेक प्लेस। सवाल है वही, अक्टूबर नवंबर आई नो, होगा या आई नो. नहीं? देखिए, अभी मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ कि the every effort is being made by CAIE and British Council to hold these exams. What is always important, and it's important to all of us, it's important to your parents, it's important to your principals and CAIE and everybody, that safety. You know, that is the most important thing, because आपको पता है कि कहीं एक जगह भी किसी बंदे की वजह से किसी को और बीमारी हो गई तो ब्लेम किस पे आएगा कि जी उन्होंने एग्जाम कर दिए, या उन्होंने स्कूल खोल दिया, उन्होंने ये कर दिया. किसी के कंट्रोल में ये चीज़ नहीं है. सो एज फार एज आई नो, every effort is being made to have these exams. I don't know how they will be held. Will they be, spaced out over more days or परफेक्ट whatever? But I think there's smart people working on solutions. So inshallah, home game. Let's परफेक्ट hope. Let's hope. इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब्दुल्ला खालिद साहब, आपके वाली बात का जवाब मैं दे चुका हूँ सर। बस ये है कि अगर आप मई जून में जाते हैं तो आपके साल ज़ाया होने के चांसेस 100% है। सही है। अच्छा अच्छा, इसके अलावा इज देयर एनी चांस फॉर अपग्रेडेशन? भाई अगर कोई चांस आएगा, कोई चीज़ आएगी तो मैं डेफिनेटली बाद वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, तो आपको ये ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, परफेक्ट। सिमरा कहती हैं यूसुफ एंड गॉड। ठीक है, थैंक यू सो मच सिमरा, थैंक यू सो मच मैम। सामिया, आई एम नॉट एंग्री व्हाई यू से दैट। नहीं नहीं, मैं सामिया आपको नहीं कह रहा था, वो एक हमारी सिमरा अहमद है, वो नाराज हो रही थी। ओके अच्छा जी, अब्दुल्ला खालिद साहब ने कह दिया। परफेक्ट। अली वकार साहब कह रहे हैं, अली वकार साहब आपका पहले सवाल आया हुआ है, पहले मैंने उसको आंसर करना है, आई थिंक आपने को दिया है। सर, डू यू नो एनी एल्गोरिथम और फार्मूला ऑन विच वी आर ग्रेडेड? किस फार्मूले पे सर हमें ग्रेड किया गया है? सवाल पूछ रहे हैं सर ये। Okay. बड़ा टेक्निकल फॉर्मूला था वैसे, मैंने एक देखा था उनके यहाँ, बड़ा कोई वो प्रोबेबिलिटी का था, पता नहीं 10-12 साल पहले पढ़ी थी मैंने, तो मुझे थोड़ी बहुत अंदाजा हो गया था प्रोबेबिलिटी है, इसके अलावा कुछ और समझ में नहीं आ रहा था। देखिए, what was done was that they have a lot of data from many years. बहुत सालों का डेटा है उनके पास, by subject, by school, many different parameters. तो उन्होंने उन सब की एक मॉडलिंग की as such, और उन्होंने उसमें अपने ये जो ग्रेड्स आए थे, प्रिडिक्टेड ग्रेड्स और रैंक्स, उसके बेसिस पे उन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेड्स निकाले. अब मसला ये है कि एवरी स्कूल, every principal tried to do a fair job. Okay, so there were some kids at Southshore who got A's and some kids who got B's and C's and so on. And what happened was that they had to take that result, and then within the each grade category, उसमें rank था कि अगर 5 बच्चों को A दिया है तो उनको rank किया 1 through 5. उन्होंने वो सब चीज़ें लेके इस मॉडल में डाली, which was based on historical results that were given for various subjects. So they did a normalization based on that. Then they did a normalization based on कि आपके स्कूल या कॉलेज में क्या रिजल्ट्स आए थे in the past 3 years. They took 3 years of data और उसको normalize किया. It's a little unfair because इस साल के बच्चे पिछले 3 साल के बच्चों की वजह से एडवांटेज भी हो सकता है, डिसएडवांटेज भी हो सकता है. अगर पिछले बिल्कुल साल के 3 साल के बच्चे बहुत अच्छे थे तो ऊपर चला गया, अगर पिछले 3 साल में बच्चों ने मेहनत नहीं की थोड़ा नीचे आ गया. तो देखिए, I go back to what I said originally. This was not this was a lose-lose situation no matter what. वो मतलब it damned if you do, it damned if you don't. मतलब वो एग्जाम नहीं करते, रिजल्ट नहीं देते, फिर भी उन्हें लोग बुरा भला कह रहे होते. अब उन्होंने कोशिश करके कुछ किया है, उस पर भी बुरा भला कह रहे हैं. सर, तो अली they were वकार in साहब a एक और बात कह रहे हैं सर, इफ अक्टूबर नवंबर डजंट हैपन, फिर यही सारा ड्रामा होगा और विल सीआई हैव अ डिफरेंट अप्रोच? I don't think the approach will be very different because there can't be any other approach, right? The only approach that is there is to take historical data and match it with current data. उसके अलावा कोई अप्रोच है नहीं. They can't do individual exams. ये नहीं कि भाई आप और मैं बैठ के एक बच्चे का इंटरव्यू लेके उसको रिजल्ट दे दें. That I know that was done in some cases, but
that's not the way they can do it for an entire cohort, especially when a lot of private kids are now going to be sitting for एग्जैक्टली exams. एग्जैक्टली So मेरे सर, ख्याल से एक चॉइस हो जाएगी कि एक बच्चे को परफेक्ट चॉइस परफेक्ट, मिल जाती है कि वो मई जून पे चला जाए, एंड दैट्स फाइन ठीक है। if they don't want भावना वासवानी nevertheless. कहते हैं, मुझे लगता है कि अगर इस सिनेरियो को देखते हुए बहुत सारे बच्चे अक्टूबर नवंबर की बजाय वो मई जून की तरफ जाना प्रेफर करेंगे, क्योंकि अब वो काफी हद तक डर गए। और डर गए एक हैं। बड़ा सवाल है, बिल्कुल डर गए हैं, और इसके अलावा एक बहुत बड़ा सवाल क्रेडिबिलिटी के हवाले से भी उठना शुरू हो गया है कि आप किस तरीके से एक बच्चे को, जिसने आपके ही एग्जाम में एएस में लेट्स सपोज ए स्कोर किया है, और आप अपने ही फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर बगैर एग्जाम दिए आप फाइनल ग्रेड उसका डी बना देते, तो ये तो एक सवाल, एक क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठाता है। भावना वासवानी कहती हैं, बट डू द ए स्टूडेंट्स हैव टू गिव अ रीटेक इन द सब्जेक्ट दे गॉट अ बैड ग्रेड इन फॉर द यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन व्हिच टेक प्लेस बिफोर द ए टू एग्जाम्स? मैंने इस हवाले से बात कर ली है आई थिंक सर हमने, कि भाई नहीं आपने नहीं उस खैर, यूनिवर्सिटी पे, जी जी, हाँ आप एक्चुअली कुछ कहना चाह रहे इन, हाँ भावना अपनी बच्ची है ना, तो आई नो हर वेरी वेल। ये बहुत परेशान रहती है बिला वजह। शी इज एन एक्सेप्शनल स्टूडेंट एंड शी डिड रियली वेल। एक सब्जेक्ट में थोड़ा रिजल्ट डाउन हुआ था इनका, तो ये उसके बारे में पूछ रही है, बिकॉज शी हैड 4 सब्जेक्ट्स एंड एक सब्जेक्ट में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ था। बट नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज रीटेक देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल 3 ए लेवल्स काउंट। सेकेंडली, और आपके 3 ए लेवल्स बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, आप हमारी फेसबुक पेज पे बड़ी प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड हैं। लेकिन अगर चौथा सब्जेक्ट या इवन तीसरा सब्जेक्ट थोड़ा ग्रेड नीचे हो गया है, एएस के बच्चों के लिए आई वुड रेकमेंड रीडूइंग द थिंग, बिकॉज एक टेक्निकल बात आ जाती है। अगर आप अक्टूबर नवंबर में एग्जाम देंगी, तो देन they will take the AS result and combine it with the A2 result to give your grade. अभी तो आपका सिर्फ A2 result के बेस पे ग्रेड आएगा। So if you do the AS retake now, then they will count the retake as part of the final A level result. Right now, if you don't do the retake, your A2 result will be your entire A level result. But if you do the retake in October, November and actually give the exam, then that will become a carry forward to the A2 result. अच्छा सर, एक और इम्पोर्टेंट चीज के सिमरा अहमद कह रही हैं कि ए टू स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, जैसे डिटेल में बता दें इनको, ए टू स्टूडेंट्स को क्या स्ट्रैटेजी ऑप्ट करनी चाहिए? किस बारे में? ग्रेड्स के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, या करंट यूनिवर्सिटीज ए के टू लिए जो अभी अभी ए टूज करंट, में नहीं नहीं सर, ए टू जिन्होंने दे दिया। दे दिया है ना? देखिए, एग्जैक्टली, मैंने यही कहा है कि अगर आपको कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आया आपके यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के रिक्वायरमेंट्स में, there are few options. Either you talk to the university and try to get them to agree to a conditional offer based on you retaking exams at some point. ठीक है, that's one option. The other option is to talk to them and say कि भाई देखिए, मैंने कंप्लीट तो कर लिया, दिस वाज अ प्रेडिक्टेड ग्रेड, आई डिडंट गिव एग्जाम्स, दिस वाज देयर ओपिनियन ऑन माय ग्रेड। आप मेरे मॉक्स देख लें, आप ये देख लें, आप वो देख लें, मेरे एएस का रिजल्ट देख लें, यू नो, काउंट माय एएस रिजल्ट। जैसे ये उल्टा कर दें कि जैसे वो कह रहे हैं ना कि A2 विल बी द फुल ए लेवल रिजल्ट, एएस नहीं काउंट होगा। आप कहते हैं कि उल्टा करते हैं, आप मेरा एएस काउंट कर लें। आई मीन, there are many strategies. You can look for different institutions that have lower grades requirements. University of London is one place that you do have options and external programs where the grade requirements are a little lower because they want to appeal to a larger base. So there are a lot of different options. I think the best thing to do is to go to your teachers and to your principals and to your counselors and ask for their help, because each individual case will result in a different outcome. तो हम एक blanket statement तो नहीं दे सकते, but the first thing is to talk to the universities, try to resolve the issue that way. उसके बाद then maybe talk to principals and teachers. परफेक्ट परफेक्ट, जबरदस्त हो गया। अच्छा, रुहेल इमरान साहब कह रहे हैं कि सर यू मेंशन दैट साउथ शोर डिडंट गिव एविडेंस टू द सीआईई, क्या ये बात दुरुस्त है, क्या सिलसिला है? What I said was, every school or college gave evidence to CIE initially. They said ओके, after that they could ask for actual evidence. So for example, जैसे हमने सारी evidence भेजी अपने सारे बच्चों की, तो उन्होंने कहा जी इस पर्टिकुलर बच्चे की आपने हमें जो एविडेंस भेजी है, हमें उसकी हार्ड कॉपी चाहिए, राइट? हमें उसके रिजल्ट, उसके काम की, जिसके बेसिस पे आपने इसको ये प्रेडिक्टेड ग्रेड दिया है, दे कुड आस्क फॉर दैट एविडेंस, राइट? सो हमने जो प्रेडिक्टेड ग्रेड दिया है, दे वुड से कि भाई आपने किस बेस पे इसको दिया है, right? परफेक्ट So परफेक्ट, that is what I said. The evidence we gave them was the predicted grade and the rank for every student within the subject.
and then they could ask us कि भाई आप इसके mock paper हमें दें, आप इसके exam paper दें on individual students. So that was for verification purposes कि अगर मैंने किसी बच्चे को A दिया है और वो कह रहे हैं भाई आप साबित करें कि इसको आपने A दिया क्यों, ठीक है, but they didn't question any of our grades, thankfully, परफेक्ट but we परफेक्ट had the परफेक्ट, evidence. If we had to give it to जबरदस्त, them, हमारे पास evidence थी. परफेक्ट हो गया। अच्छा, सबा फरीन साहिबा, आपका सवाल है, विल एग्जाम्स रन इन अक्टूबर नवंबर, बट भाई आपको मैं ये वाली जो पूरी हमारी पॉडकास्ट है इसको मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा अपने चैनल के ऊपर, तो आप वहाँ पे पूरा देख सकते हैं। हमने बहुत डिटेल में इसको पहले से डिस्कस किया, मैं नहीं चाह रहा कि इस पर हम दोबारा बात करें। मेडिकल स्कूल्स में एडमिशन अक्टूबर में होगा, क्या करें अब? खान मोहम्मद साहब कह रहे हैं। देखिए, मेडिकल स्कूल्स इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन बिकॉज उसमें इतने लोग इन्वॉल्व हैं, देयर लॉट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस दैट ओवरसी दैट, एंड एग्जैक्टली। मैंने बहुत जल्दी सबक सीखा था जब मैं पाकिस्तान वापस आके साउथ शोर शुरू किया था 16 साल पहले। मुझे एक बहुत बड़ा सबक मिला था मेडिकल स्कूल के हवाले से। तो उनके रिक्वायरमेंट्स यूं करके मतलब चुटकी के तरह चेंज होते हैं। तो all I can say is go to the medical schools that you're applying to, ask them specific questions. Don't ask general questions, ask specific questions about your बिल्कुल situation कि भाई मुझे क्या करना है to get admission. बिल्कुल उसके बिल्कुल। सर बेस पे सर इसी हवाले से, इसकी हवाले से मैं खान मोहम्मद साहब को बताना चाहूंगा कि मेरे चैनल के ऊपर डॉक्टर अवैस सैयद के साथ एक बहुत बड़ी डिस्कशन मौजूद है। काफी सारी वीडियोस हैं उस हवाले से जिसमें मैंने उनसे बात की है कि मेडिकल कॉलेज का प्रोसेस क्या होता है। इन तमाम चीजों के हवाले से आपके बहुत सारे सवाल आपको उस वीडियो में भी मिल जाएंगे। जहां से वैसे आप कहते हैं अगर हमने यूनिवर्सिटी में जिस सब्जेक्ट का रिजल्ट डाला था, एक सेकेंड, जिस सब्जेक्ट में रिजल्ट डाला था और वो अच्छा नहीं आया, और हम अगर दूसरा सब्जेक्ट दें, अगर क्या ऐसा हो सकता है विदाउट गिविंग द सेम सब्जेक्ट वेयर वी गॉट बैड? देखिए, इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटी ये चीज एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट होती है पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जैसे अगर आप कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो उनकी मैथमेटिक्स रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आप सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ सब्जेक्ट को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने कोशिश की अली वकार साहब आपके सवाल को जवाब देने की। अली वकार साहब का मैं आखिरी सवाल ले लेता हूँ एक। क्या ये ऑनलाइन, सर एक सवाल है कि क्या सीआई वाले हमारे ऑनलाइन एग्जाम नहीं ले सकते? नहीं बेटा, that's not, unfortunately that's not a practical thing. As Abdullah साहब can also tell you, हमने भी online exams किए थे साउथ शोर में mocks, and they weren't very successful because देखें उसमें फिर आप 100% accuracy से नहीं कह सकते कि it is the student's own work, ठीक है, and also it's not practical to do it on a worldwide basis, so you can't do it for Pakistan and not do it for other countries. Because CIE is a worldwide organization and they must have the same protocols everywhere. हाँ, उसके बाद थोड़ी बहुत adjustment करते हैं, जैसे मैंने कहा, there are different things in Pakistan. For example, the number of private students allowed and stuff that they are not allowed in other countries. So they do adjust a little bit, but that's around the edges. The main bulk of it has to remain consistent. अच्छा जी, एलवे ने कहा है कि एग्जाम्स अक्टूबर नवंबर में होंगे या नहीं। इस सवाल का जवाब मैं बहुत डिटेल में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आप इस इंशाल्लाह पॉडकास्ट को अगर थोड़ा होंगे. सा, बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह होंगे, लेकिन ये कि इस हवाले से जो डिटेल डिस्कशन है वो आप इसी पॉडकास्ट पे जब हम इसको अपलोड करेंगे तो आप देख सकेंगे, कोई मसले की बात नहीं है। तो सर हमारे पास एक और सवाल है। Miss Samia कह रही है, Mr. Masood, do you think that universities will be more compassionate with students for 2020 and 21? What do you think, sir? Of course. Why wouldn't they be? Yeah, and look, brutally honest, they need students too. They've also taken hits. They've been shut down and they've had a lot of problems themselves. So they want students. ऐसा नहीं है कि they don't need students. Everybody needs students. And so they want students. Okay. And बिल्कुल बिल्कुल, so for that reason, they have to be flexible. Otherwise, where are they going to get these students from? सारे परफेक्ट सारे परफेक्ट अच्छे बच्चे तो नहीं ले सकते ना. परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, इसके हवाले से हरम सलमान साहब कह रहे हैं, इफ वी गेट यू इन एएस इट विल बी कैरी फॉरवर्ड और नॉट। सर इस हवाले से भी हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं कि ऐसा होगा या नहीं होगा। इसके लिए आपको जब हम इसको दोबारा री अपलोड करेंगे तो आप इस पॉडकास्ट को देख लीजिएगा, उसमें ये है कि आपके बहुत सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठीक है जी। सर मुझे लगता है हमने तकरीबन तमाम एरियाज को कवर अप कर लिया है। ठीक है, तो सर एंडिंग नोट पे क्या कहना चाहेंगे सर? वो एक
बहुत दफा देखते हैं आप टी शर्ट्स और पोस्ट ऊपर लिखा होता है स्टे काम, राइट? So that's my real message to everybody. Stay calm. It's not an ideal time for anybody. Um, stop stop blaming people. Stop feeling that you're victims. You're not victims. You are wonderful young people who are going to be able to ride this storm and come out the other end, inshallah, and recover from this position. That is my wish and hope for each and every one of you. Your teachers, your principals, your parents, your well-wishers are all there. उनके साथ आप मिलके आगे बढ़ेंगे। और यस, कोई कोई नहीं डिनाई करता, बहुत सारे लोग इस वक्त अपसेट हैं, उनके साथ आई गेस कह सकते हैं नाइंसाफी हुई है with grades and this and that, but that doesn't define who you are. That doesn't define what's going to happen in your life. That doesn't define who you're going to become. 10 years from now, nobody is going to care कि वो A level में क्या मिला. They're going to care what kind of a human being you are, what kind of a person, husband, wife, brother, sister. ये ज़्यादा मैटर करेगा. तो अपने पॉजिटिव रहें, मेहनत करें, सॉल्यूशंस ढूंढें, बजाय लोगों को ब्लेम करने के लिए सॉल्यूशंस ढूंढें और इंशाल्लाह आगे बढ़ें. So that's my wish and hope for all of you. परफेक्ट सर। सोशल मीडिया की खास बात ये होती है कि हर बंदा जो दिल में आता है वो लिख सकता है, ठीक है। तो स्नेहा शर्मा कहती हैं कि भाई अंधी हो जाऊंगी, इतनी लाइट मार रहे हो, ठीक है। तो सर माशाल्लाह इसकी वजह से समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो सब मेरा पार्ट ऑफ भी द है गेम। हम नहीं दोनों वो मेरा हाँ हम दोनों का, लेकिन मेरा ज्यादा आ रहा है, नाम मेरा ज्यादा आता है वैसे सर। हम स्टेरियो में है ना यार। एग्जैक्टली। स्नेहा शर्मा आगे ऑब्वियसली तो कुछ कहानी बता रही है। आपकी लाइट से मैं कंपेयर नहीं कर सकता यार। जवानी एक चीज होती है, जवानी अलग है। अच्छा सर एक छोटी सी बात सर, एक सवाल मेरे जहन में आखिर जाते जाते आया था, वो ये आया कि सर क्या स्कूल जब खुलेंगे वो स्कूल सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए खुल सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक सर, क्या स्कूल खुलेंगे? पहली सवाल तो ये है। और क्या स्कूल अगर खुल जाते हैं क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि साउथ शोर, एज यू नो, वी बीन टॉकिंग अबाउट कि हम जल्दी से जल्दी खोलना चाहते हैं, एज सून एज इट्स सेफ टू डू सो एंड वी आर अलाउड टू डू सो बाय द अथॉरिटीज, बिकॉज आपको पता है साउथ शोर ट्रेडिशनली हैज केप्ट देयर क्लास साइजेस एट अ वेरी रीजनेबल नंबर, एंड अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज ऑफ दैट हम अभी भी कॉलेज शुरू कर सकते हैं विद सोशल डिस्टेंसिंग विदाउट एनी इश्यूज। एंड आपने कैंपस देखा हुआ है, आपने खुद क्लासरूम विजिट की हुई है इन द पास्ट फ्यू डेज व्हेन यू केम टू कैंपस, जहां हमने ये किया हुआ है। We've added extra wash basins around the campus. We have got SOPs in place, that will take care of our kids to the best of our ability. Face masks, all kinds of things. And I think that's very essential. If anybody wants to open an institution, that's what has to be done. Now, whether other people can do social distancing or not, I think that's really up to the individual institutions, and I'm sure everybody will make their best effort to make it happen. It is going to be difficult. The larger the institution, the more difficult it is. South Shore, again, मैं अपनी ज़्यादा बात कर सकता हूँ because I know I'm there. We have a nice big campus. We have lots of space. तो हम तो आराम से कर रहे हैं. And that's why we are eager to open. Of course, safety first, because keeping my kids safe and keeping you and my other faculty safe and my staff, for me, as you know, with my age comes that natural instinct of being a father figure and a grandfather figure. I'm old enough to be a grandfather figure to my students. तो मेरा फर्स्ट यही होता है कि पहले सेफ करूं सबको। मेरा स्टाफ भी मुझे कहता है, सर आप इतने कंजर्वेटिव हैं। भाई मैं अब सिर्फ कंजर्वेटिव उसमें हूँ कि मेरे बच्चे, मेरा स्टाफ, मेरे फैकल्टी मेंबर्स सब सेफ रहें। उसके बाद nobody wants to open college more than I do, because I miss being there, I miss my students, I miss my colleagues, and so I think everybody is going to have to work very hard to get social distancing done. Alhamdulillah, South Shore is ready to go. We could open tomorrow if necessary. But I think everybody will have to do that. I don't think anybody has a choice, because the new normal is the face masks and the thermometer at the door, the hand washing frequently, दरवाज़ों के नॉब्स कॉन्स्टेंटली चेंज करने, सफाई बहुत रखनी है, लोग जो बीमार हैं उनको कॉलेज नहीं आने देना। I mean, everybody has to do it, and it has to be a community effort.
You don't have to think परफेक्ट। about yourself, you have to think about others as well. बेस्ट हो गया सर, बेस्ट हो गया। खान मोहम्मद साहब, आपके ये जो पर्टिकुलर आपने जो पीएमडीसी के हवाले से बात की है ना, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। डॉक्टर रवेश सैयद के साथ पॉडकास्ट हुई है, उसमें आपको बहुत डिटेल में बेहतर तौर पे आंसर मिल सकेगा इस हवाले से। तो सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बहुत मजा आया। इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश ये होगी कि इस सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, हम थोड़ा सा करियर काउंसलिंग के हवाले से बात करें कि काउंसलिंग किस तरह से हो सकती है, सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या हो सकती है। मेरा इरादा था, लेकिन हमारे इस वक्त जो सीआई इशूज बहुत ज्यादा अपडेट्स, बहुत ज्यादा इशूज रिजर्व हुए थे, तो मैंने सोचा कि इसी पे थोड़ा सा बात ज्यादा करें आज। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। तो हाँ, नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जी, जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आप और मैंने थोड़ा काम किया हुआ है, तो देयर आर सम YouTube videos that we have published that do answer subject selection and some of the other things in a परफेक्ट, very small way। 2-3 मिनट के वीडियोस हैं, इसलिए कि वो परफेक्ट, शॉर्ट परफेक्ट, फॉर्म में है। लंबी बात आपसे परफेक्ट। इंशाल्लाह आगे होगी किसी वक्त। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। तो नाज़रीन, थैंक यू सो मच आप हमारे साथ जुड़े रहने का। मुझे अच्छा लगा कि हमने आज फर्स्ट लाइव किया था और उसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। सर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास तकरीबन अच्छे लोग जो थे हमारे साथ मौजूद रहे और बहुत सारे लोगों ने इंटरैक्टिव फीडबैक भी दिया अपना। तो नाज़रीन, अपना ख़्याल रखिएगा। इसके साथ ही अब्दुल्ला शाहमीर और सर राहील मसूद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। खुदा हाफिज।